Very good afternoon, Harshit. Very good afternoon. Very good afternoon, Shraddha. ओके हर्षित, आप मॉर्निंग क्लास में नहीं थे शायद, है ना? Okay, so now we start the next topic. Physiological factors determine speed. And injury in sports. Okay, so we see here physiological factors determine determining speed. So in previous class we see here the physical factors determining strain. So okay, so today we see here the next topic, physiological factors determining speed. Again, I want to explain it in this class because some students are not there in the previous class. Okay. Okay. Very good morning. Sorry. Very good afternoon, Vikram, Mansi. Okay. So I am seeing here only two views. It is fluctuate in 3/4. Okay, so those who are here type P. Those who are here in the class type P. Okay, Saiba, Harshit, Shraddha. Okay. Now I am seeing here 5 students. Okay. I am noted down your responses here. Okay. So what is the speed? You know about that. Physiological factors determining the speeds for the speed. Here is the various factors which is determine speed. Okay. So we see it in here in the diagram form. Okay. So first one is that first factor is muscular composition, which is we see already in the first type, that physiological factors determine the strength and the muscle composition. So same muscle composition is in the speed also.
Okay, so muscle composition required for the speed also. It is required in the strength and speed. Okay, it is always required in the strength and speed. Muscle composition. So what is the muscle composition? The speed of any person depend on the functioning of his muscles. It is most important for us because those who have a bulky body वो एकदम speedily running नहीं कर सकता है. So as per their muscle composition, we distribute the games and sports to the students. Whose class is there? Which class? Shraddha? Okay. So we see here the muscle composition. Okay. So muscle composition means कि the speed of any person depend on the functioning of muscles, structure of muscles. ओके सो इन्फॉर्म टू द सर ना कि टाइम टेबल में कौन सा सब्जेक्ट है आप सर को थोड़ा सा रिमाइंड करवा दो ठीक है ड्यूरिंग द क्लास ओके सो कैन वी स्टार्ट हियर okay so for example we see the muscle composition example in the games and sports उस अकॉर्डिंग टू मसल कंपोजिशन अकॉर्डिंग टू बॉडी स्ट्रक्चर हम वो गेम्स इवेंट्स हम डिस्ट्रीब्यूट करते हैं लाइक कि मस्कुलर है लेकिन उसमें इंड्योरेंस ज्यादा है ओके उसमें इंड्योरेंस ज्यादा है मस्कुलर बॉडी है उनको हम लोग लॉन्ग डिस्टेंस के लिए हम रिक्वायर्ड करते हैं या फिर आपने देखा होगा स्प्रिंटर्स के लिए आप बॉडी स्ट्रक्चर कैसे होना चाहिए उसमें आप मसल कंपोजिशन कितना होना चाहिए तो स्पीड के लिए क्या होता है कि बल्कि मसल्स या बल्कि बॉडी नहीं होनी चाहिए सो लाइक दैट ओनली वी सी द मसल कंपोजिशन फॉर द स्पीड ओके so the muscular functioning depends on the fibers present in it so there is a two types of fibers in our body muscle fibers white fibers and red fibers okay so white fibers आपको पता है कि white fibers sprinters means early हमें अभी के अभी स्पीड बढ़ाना है बॉडी में तो वो जल्दी से कॉन्ट्रैक्ट होते हैं एक्सपांड होते हैं वो है व्हाइट फाइबर्स वो काम में आते हैं लाइक रेड फाइबर्स जो है वो रेड फाइबर्स क्या होते हैं वो स्लोली काम करते हैं मींस लॉन्ग डिस्टेंस के लिए लॉन्ग टर्म के लिए मुझे फिजिकल एक्टिविटी करनी है और स्टैमिना बचा के रखना है एक ही सेम स्पीड में तो हमें रेड फाइबर्स सपोर्ट करते हैं एंड व्हाइट फाइबर्स क्या होते हैं व्हाइट फाइबर्स मींस वो कुछ टाइम के लिए फास्ट वर्क करते हैं उसमें फटीग जल्दी आता है लेकिन जो स्प्रिंटर्स जैसे 100 मीटर 200 मीटर स्प्रिंट मुझे करना है तो उस टाइम पे वो फाइबर्स वर्क करते हैं ओके सो दिस इज द कंपोजिशन ऑफ मसल ओके सो देन सेकंड वन इज फ्लेक्सिबिलिटी so second factor is flexibility those which is determining the speed so flexibility is most important for the smoothly movements okay अगर हमारे बॉडी में फ्लेक्सिबिलिटी है हम मूवमेंट्स फास्ट और स्मूथली कर सकते हैं देन हम इंजरीज को अवॉइड करते हैं okay so flexibility of the body also impacts speeds good flexibility of the body is helpful in rapid operation without any internal implementation impairment sorry not implementation this is the impairment okay so internal impairment विदाउट एनी इंटरनल इम्पेयरमेंट के साथ हम मूवमेंट्स करते हैं वो मूवमेंट स्मूथली होने चाहिए एंड पर्टिकुलर एंगल में होना चाहिए सो फॉर दैट फ्लेक्सिबिलिटी इज मोस्ट इंपॉर्टेंट बिकॉज आप लॉन्ग डिस्टेंस रनिंग कर आप शॉर्ट डिस्टेंस रनिंग कर रहे हो दैट टाइम यू रिक्वायर्ड स्पीड के लिए आपके मूवमेंट स्पीडली होने चाहिए मूवमेंट्स होने के लिए आपके फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए तो आपके जो लेग्स की स्ट्रेंथ है लेग्स की स्ट्रेंथ के साथ आपका जो बिटवीन टू लेग्स डिस्टेंस है अकॉर्डिंग टू हाइट हमारा कम ज्यादा होता है
तो उसके लिए फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए। जैसे हमारे हैंड मूवमेंट्स है, हैंड मूवमेंट्स है, हैंड लेग्स मूवमेंट्स है, उसका एक कोऑर्डिनेशन होता है, उसके लिए भी फ्लेक्सिबिलिटी बहुत जरूरी है। सॉरी, okay, so next factor is explosive strength. Next factor is explosive strength. Okay, so what is the explosive strength? So explosive strength means strength, combination of strength and speed. Explosive strength means this is the combination of strength and speed. आपके बॉडी में strength भी है और speed भी है। तो speed के लिए आपके बॉडी में जैसे leg strength, जैसे legs के ऊपर हम legs के movements कर रहे हैं, उस टाइम में हमें मसल हमारे लेग्स में स्ट्रेंथ की जरूरत होती है, वैसे ही स्पीड की जरूरत होती है। स्ट्रेंथ एंड स्पीड का कॉम्बिनेशन मींस एक्सप्लोसिव स्ट्रेंथ। So it is necessary for any explosion to have an explosive strength. The combination of strength and speed is called explosive strength. In other words, it can be said that doing a task with complete strength and speed is explosive strength. So explosive strength depends on muscle structure, shape, uh, metabolic activity and training. Okay, it is depend on the depend on the structure of the muscles, body shape, जिसे मैंने बोला था कि बॉडी शेप और स्ट्रक्चर ऑफ द बॉडी के ऊपर डिपेंड होता है उसका पार्टिसिपेशन इन द इवेंट्स। ओके, तो उसके लिए मेटाबॉलिक एक्टिविटीज, उसकी ट्रेनिंग, उसके ऊपर डिपेंड होती है एक्सप्लोसिव स्ट्रेंथ के ऊपर। सो इन एडिशन टू दिस द लेवल ऑफ फास्ट ट्विच फाइबर्स आल्सो हैज इफेक्टिव ऑन एक्सप्लोसिव स्ट्रेंथ। तो एक्सप्लोसिव स्ट्रेंथ में मसल कंपोजिशन भी होता है। मसल कंपोजिशन मींस फाइबर्स, एक्टिव फास्ट फाइबर्स की जरूरत होती है, मींस क्विकली मूवमेंट करने के लिए। सो द नेक्स्ट वन इज मोबिलिटी ऑफ नर्वस सिस्टम। ओके, नेक्स्ट वन इज मोबिलिटी ऑफ नर्वस सिस्टम। So what is the meaning of mobility? Mobility means who is here, who is present here? Type P, please. Who is present here? Type P. I'm waiting for your responses. Who is here? Okay, only Mansi. Beta, can you explain me what is the mobility of nervous system? What is the mobility of nervous system? While we are running means जब हम रनिंग करते हैं तो हमारे मसल्स कॉन्ट्रैक्ट एंड एक्सपैंड होते हैं इन स्पीड। ओके, हम स्पीडली जब हम रनिंग करते हैं तो हमारे जो मसल्स है वो स्पीडली कॉन्ट्रैक्ट एंड एक्सपैंड होते हैं, रैपिड कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन ऑफ नर्व्स। सो इट डिपेंड्स ऑन द रैपिड कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन ऑफ नर्व्स। जब तक हमारा नर्वस सिस्टम हमें ऑर्डर नहीं करता तब तक उसका ऑर्डरेशन भी, नर्व्स का भी जो कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन है वो स्पीडली होना चाहिए। सो दिस इज द मोबिलिटी ऑफ नर्वस सिस्टम। तो हम कोई भी स्पीडली मूवमेंट करते हैं तो ये फैक्टर हमें डिटरमाइन करता है। ओके, सो नेक्स्ट वन इज रिजर्व एनर्जी। नेक्स्ट एंड लास्ट वन फॉर द स्पीड इज reserve energy. So in the science we learn about the reserved energy. हमारी एनर्जी कहाँ पे रिजर्व होती है, किसी को पता है? Sorry, anyone knows about our reserved energy?
Anyone knows about this? What is the reserved energy? In which sources we reserved our energy in our body? Very good. In form of ATP molecules and other one. I want to give you clue कि जैसे जो जिम ट्रेनिंग होती है, बॉडी बिल्डर्स होते हैं, वेट लिफ्टर्स होते हैं, अपना टाइम ड्यूरेशन बढ़ाने के लिए एक्सटर्नली उस चीज को इंटेक करते हैं. What is this? Okay, that is CP, creatine phosphate. Okay, ATP and CP is a source of reserved energy in our body. Okay, so the availability of these two in the body determines the speed. These are called biochemical stores. These are called biochemical stores. So here we see as a reserve energy we see in the body ATP and CP. Okay, it is an energy stores, biochemical stores, CP. Okay, so most of the ATPs are derived from aerobic activity. Therefore, aerobic activities grows our biochemical reserves which are helpful in increasing the speed. तो जब हम स्पीड बढ़ाते हैं या फिर कोई भी मूवमेंट कर रहे हैं तो हमें क्विकली हमें मूवमेंट बढ़ाना है तो हमें एक्स्ट्रा एनर्जी की जरूरत होती है. तो वो कहाँ से आती है? हमारे रिजर्व्ड एनर्जी से. So this is also factor determining the speed. So hope all are understand this. Hope all are understand this one. So where is the Prathamesh? Prathamesh, are you here, beta? Okay. So is it clear, all of you? So this topic is physiological factors determine the speed. Speed के लिए कौन सा factor हमें determine करना है? कौन सा factors हमें जरूरी है? Muscle composition, flexibility, explosive strength, mobility of nervous system, and reserve energy. Okay, so note it down in your notebook like that only. अगर आप ऐसे इस तरीके से पढ़ोगे तो आपके आसान हो जाएगा और आप अच्छे से learn कर पाओगे. Okay, so first one is the physiological factors determining the strain. So which factors is there for the strength? Strength के लिए कौन से factor जो है determine करते हैं? Weight of the body, size of muscles, muscle composition, and intensity of nerve impulse. Okay, that is the factors for the strain. And for the speed, secondly we see here the physiological factor determining the speed, muscle composition, flexibility, explosive strength, mobility of nervous system, reserved energy, that is ATP and CP. These are the source of reserved energy. Okay, so when we are doing extraordinary work in the sports and games, okay, so there is a sprints, okay, jump, there is a types of jumps जहाँ पे हमें क्विक स्पीड चाहिए, वहाँ पे कौन से फैक्टर डिटरमाइन करते हैं. ओके, होप ऑल आर अंडरस्टैंड दिस. ओके, सो प्रथमेश सिर्फ प्रेजेंट सॉरी प्रेजेंट ही लगाने के लिए आया था. ओके, सो ओनली मानसी, हर्षित, साहिबा, श्रद्धा, she is also here. Okay, for the class. So can you see the next? Physiological factors determine the endurance. So next factor for the physical fitness. Components of physical fitness में first component हमने देखा था strength, second speed, third we see here the endurance. Okay. So hope all understand these things. Okay. So here we see
physiological factor determines the endurance. ओके, समझ में आ रहा है कि यहां से ऐसे फ्लाइट की तरह निकल जा रहा है. होप ऑल आर अंडरस्टैंड दिस. या फिर स्लिप हो रहा है, ग्लाइड हो रहा है, बता दो. Sejal, after long time you are here. Okay, so endurance, what is the endurance? Anyone can explain me what is the endurance? Mansi, Harshit, Saiba, Shrijal, Shraddha, Sejal, any one of you, what is the endurance? In our language, हम explain कैसे करेंगे endurance को? What is the endurance? What is the endurance? Anyone can explain me what is the endurance? The capacity to withstand. Okay. Harshit. What is the endurance? Ability to maintain a steady performance over a longer period of time. Very good. So what is the endurance? Endurance means in our language कि अगर कोई काम है या फिर एक्टिविटी है, मीन्स रनिंग है, लॉन्ग डिस्टेंस रनिंग है, तो हमें ज्यादा टाइम तक करना पड़ता है. कोई एक एक्टिविटी है जो लॉन्गर टाइम के लिए हमें परफॉर्म कर रहा है विद द सेम स्पीड. Okay, with the speed also, with the strength also, we perform an activity for the longer time, that is the endurance. So in the endurance there is the first factor, aerobic capacity. Aerobic capacity, what is the aerobic capacity from your side? What is the aerobic capacity? Very good. Capacity to resist, this is also a point in the endurance. So first factor is aerobic capacity. So how to explain aerobic capacity? Aerobic, anaerobic, आपको पता ही होगा. एरोबिक एंड एनारोबिक कैपेसिटीज साइंस में आपने पढ़ाई है. सो व्हाट इज द एरोबिक कैपेसिटी? अगर एक कोई चीज, एक कोई एक्टिविटी है जो हम उसको बार बार परफॉर्म कर रहे हैं कंटिन्यूसली, उसको परफॉर्म मींस परफॉर्म कर रहे हैं या फिर कंटिन्यूसली इसको एक्टिविटी को हम आफ्टर लॉन्ग टाइम के लिए हम परफॉर्म कर रहे हैं, तो वो है एरोबिक. एरोबिक मींस कि आप कंटिन्यूसली उस चीज को कर रहे हो, कंटिन्यूसली उस चीज को परफॉर्म कर रहे हो, उस एक्टिविटी को हम मींस एक लेवल के साथ, एक स्पीड के साथ, स्ट्रेंथ के साथ हम उस एक्टिविटी को परफॉर्म कर रहे हैं. सो दैट इज द एरोबिक कैपेसिटी. एरोबिक कैपेसिटी मींस अभी देखो मुझे स्टेयर पे चलना है, स्टेयर पे चलना है, स्टेयर पे मुझे एक्सरसाइज करनी है, तो कंटिन्यूसली मैं वो वर्क करूंगी, कंटिन्यूसली मैं वही मसल ग्रुप यूज करूंगी, वही मसल्स. तो our muscles needs energy to keep the action continuous. Okay, our muscle needs the energy to continuous action. Okay, so energy supply can only be in the presence of oxygen. So
The ability to maintain the proper supply of oxygen to a person muscles while working is called aerobic ability. Aerobic ability means कि आप अगर एक्सरसाइज स्टार्ट करते हो या फिर आप जल्दी जल्दी कभी कभी चलने की कोशिश करते हो या फिर आपको ज्यादा चलना है, तो उस टाइम पे हमें सांस हमारी फूल जाती है। उस टाइम पे क्या होता है कि ज्यादा एनर्जी प्रोड्यूस करने के लिए हमें किसका ज्यादा सपोर्ट चाहिए, ऑक्सीजन का। तो जैसे ही आप मूवमेंट्स बढ़ाओगे उतना ऑक्सीजन लेवल आपका बढ़ेगा। ओके, उतना ऑक्सीजन आपके बॉडी में ऑक्सीजन इनटेक बढ़ेगा। दैट इज द एरोबिक एबिलिटी, मींस आप ज्यादा से ज्यादा ऑक्सीजन कंज्यूम कर सक रहे हो आपके एक्टिविटीज के। अब नहीं तो क्या होगा, आपको फटीग, आप जल्दी थक जाओगे या फिर आपको हो सकता है चेस्ट पेन होने लगता है। ओके, सो जिसको विदाउट फटीग, विदाउट चेस्ट पेन, विदाउट मसल पेन वो एक्टिविटी कंटिन्यूअसली कर पाता है, उसकी एरोबिक कैपेसिटी अच्छी है, मींस एरोबिक एबिलिटी है उसमें। So these abilities are extremely important for the endurance of performance. The type of aerobic capacities are as follow. First one is oxygen intake. We inhale, so that time we intake the oxygen. The amount of oxygen that is taken from the environment by the lungs depends on the life expectancy of the lungs. So lungs की कितनी expectancy होती, lungs जितना expand होगा आप उतना ही सांस ले पाओगे। ओके, सो lungs size, the number of active air chambers etc. It is depend on the size of lungs and हमारे जो chambers है lungs में जहाँ पे हम इनहेल करते हैं तो एयर स्टोर होती है, उसके ऊपर डिपेंड करता है। ओके, अगर किसी की ज्यादा हो सकती है, किसी की कम हो सकती है कैपेसिटी, तो उसके एरोबिक कैपेसिटी को बढ़ाने के लिए भी प्रैक्टिसेस की जाती है, ट्रेनिंग किए जाते हैं। तो फॉर द इंड्योरेंस, हमें इंड्योरेंस बढ़ाना है तो हमें शुरू से क्या करना पड़ेगा, एक दो दिन ऐसे, एक दो तीन दिन हम लोगों को पहले नॉर्मल एक्सरसाइज स्टार्ट करनी पड़ेगी। नॉर्मल एक्सरसाइज के बाद उसमें ड्यूरेशन बढ़ाना पड़ेगा, फिर उसमें स्पीड बढ़ानी पड़ेगी, तब जाके हम एरोबिक कैपेसिटी को बढ़ा सकते हैं। तो इनहेलेशन एंड एक्सहेलेशन इनहेलेशन एंड एक्सहेलेशन पे डिपेंड होता है कि आपकी एरोबिक कैपेसिटी कैसे हो। तो the second thing is that oxygen uptake. So second thing in the aerobic ability is oxygen uptake. The amount of oxygen used by the muscles from the body is called oxygen uptake. तो हमारे मसल्स जितना ऑक्सीजन यूज कर रहे हैं, हम जितना ऑक्सीजन लेते हैं उसमें से कुछ ऑक्सीजन हमारे मसल्स यूज करते हैं, तो वो है ऑक्सीजन अपटेक। सो दिस डिपेंड्स ऑन द रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ ऑक्सीजन इन द सेल्स। If the diffusion takes place at a faster pace, there is a raise in uptake also. ओके, तो हमारा जितना ऑक्सीजन मसल्स ऑब्जर्व कर लेता है, जितना रैपिडली जो ऑब्जर्व करता है उतना रैपिडली वो यूज होता है, दैट इज द ऑक्सीजन अपटेक। देन थर्ड वन इज ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट. So what is the oxygen transport? The amount of oxygen that is absorbed in the blood by the lungs reaches the active muscles. तो हम जितना ऑक्सीजन ले रहे हैं उसमें से कितना ऑक्सीजन ब्लड में जाएगा वो डिपेंड करता है कि हमारी कैपेसिटी कितनी है कि हम ऑक्सीजन अंदर लेके स्टोर कर सके। ओके, so this is called oxygen transport at transport. The amount of oxygen in the blood depends on the amount of oxygen taken by the lungs and level of hemoglobin in the body. It is depend on the HB also. So the level of hemoglobin is fixed. The flow of oxygenated blood depends on the capacity of the heart. This can be improved by the training. So in the games and sport, in the physical education, we developed our aerobic capacity. So when we are doing training, that time we feel fatigue, we feel pain, chest pain. First we start the exercises and physical activities. So that time we feel the fatigue, that time we feel the chest pain. So this is the this is the alarm for you कि आपकी एरोबिक कैपेसिटी कहाँ तक है। ओके, अगर हमें पता करवाना है कि मैं कितना भाग सकती हूँ, कितनी एक्टिविटीज फास्टली कर सकती हूँ, कितने ड्यूरेशन के लिए कर सकती हूँ, तो ये हमारे अलार्म होते हैं, ये हमारे सिम्टम्स है कि हमें चेस्ट पेन होने लगता है, हमारी सांस फूल जाती है या फिर फटीग फील करते हैं, चक्कर आना स्टार्ट हो जाता है।
तो ये कैपेसिटी हमें बढ़ाने के लिए हम कब कहाँ से बढ़ाएंगे, हम ट्रेनिंग के थ्रू। आज हमने 10 रेपिटेशंस किए हैं, तो कल हम 12 करेंगे, परसों हम 15 करेंगे, 16, 17, ऐसे हम लोग हमारे ट्रेनिंग के लेवल को बढ़ाते जाएंगे। वैसे वैसे हमारी एरोबिक कैपेसिटी बढ़ती जाएगी। जैसे ही एरोबिक कैपेसिटी बढ़ेगी वहां पे एंड्योरेंस बढ़ेगा। ओके, मींस आप लॉन्ग टर्म के लिए एक्टिविटी आसानी से विदाउट एनी फटीग्स कर पाओगे। बायोकेमिकल रिजर्व, दैट इज एटीपी एंड सीपी, तो जहां पे हमारी एनर्जी रिजर्व रहती है उसकी यूजेस, इट इज डिपेंड ऑन दैट। तो बायोकेमिकल रिजर्व, दिस एनर्जी कम्स फ्रॉम अवेलेबल ग्लाइकोजन and sugar in blood. So if the activities taken for lungs duration requires more energy, so in this case accumulate fats in the tissues are used as a fuel. तो हमारे जो भी stored fats होते हैं, जितना ग्लूकोज ग्लाइकोजन होता है, जो शुगर लेवल होता है, वो रिजर्व एनर्जी के थ्रू यूज होता है। ओके, एनर्जी प्रोड्यूस करने के लिए यूज होता है। सो दिस हैपन व्हेन वन not getting energy, so the lack of energy can also result in low endurance level. So this is the aerobic capacity. तो aerobic capacity में हमने देखा है ऑक्सीजन इनटेक क्या है, ऑक्सीजन अपटेक क्या है, ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट क्या है, एंड देन बायोकेमिकल रिजर्वेशन क्या है. So this is this. So all are included in the aerobic capacity. So all are clear this. All are clear in this. It is clearly understood. Okay, so type Y only. Okay, this is aerobic capacity. Then second factor is that tolerance of lactic acid. Tolerance of lactic acid. Tolerance of lactic acid. Tolerance of lactic acid. It is clearly visible or not? Okay, now it is clearly visible. Okay, so lactic acid is a biological substance which gets accumulate in the muscles as a result of long-term exercise. So lactic acid long-term exercise के लिए यूज होता है, ये आप सभी ने बायोलॉजी में पढ़ा है. Okay, so lactic acid is a biological substance which can accumulate in the muscles as a result of long time. So due to its accumulation, the person experiences tiredness. As a result, the agility of the muscles is affected. So, tolerance of lactic acid can be increased by training. This allows for exertions to work out the endurance for the endurance period, and the tolerance of the person increases. So, this reduces the experiences of fatigue for long period of exercise and increase the tolerance of the person. Okay, tolerance of the lactic acid. Lactic acid के tolerance की वजह से क्या होता है, जब हम long time किसी वर्क को करते हैं तो हमें बहुत ज्यादा मसल पेन होता है या फिर हमारे मसल्स टायर्ड हो जाते हैं, हम फील करते हैं कि हमारे मसल्स में पावर कम हो गया है. ओके, तो ये कब पॉसिबल होगा, लैक्टिक एसिड टॉलरेंस को हम कब अवॉइड कर सकते हैं, जब हम लॉन्ग ड्यूरेशन एक्टिविटीज बार बार प्रैक्टिस करते हैं. ओके, सो बार बार प्रैक्टिस करते हैं तब जाके ये फुलफिल होता है. ओके, सो जब हम प्रैक्टिस करेंगे, टॉलरेंस ऑफ लैक्टिक एसिड कब बढ़ाना, जब ट्रेनिंग में बार बार चेंजेस हो जाते हैं, लेवल ऑफ ट्रेनिंग चेंजेस बाय पर्सन टू पर्सन for the games and sports, so that time we avoid this. Okay, so next one is economy activity techniques. Economy activity techniques. So what is the meaning of economy activity techniques?
Anyone can explain me that what is the economy activity techniques? All of you get that points? Type yes. Why? Sorry, type why? If yes, type N. If no, all of you get that point? Economy activity techniques. What is the meaning of economy activity techniques? Anyone can explain me that? So, I want to read it. A player is able to maintain continuity of his activity for a longer period if he uses the energy as per the needs of the activity. तो प्लेयर कहाँ पे कहाँ पे मेंटेन करेगा खुद को, जहाँ पे ज्यादा एक्टिविटी होती है, जहाँ पे ज्यादा एनर्जी यूज होती है, वहां पे वो वो यूज करने में सक्षम हो. ओके, सो लॉन्गर पीरियड के लिए वो अपनी एनर्जी यूज करे. सो अपार्ट फ्रॉम दिस एनर्जी कैन ऑल्सो बी accumulate using proper techniques. So by using proper techniques, a player can save up to the 20% of energy. So as a result, the activity may continue for a long time. This technique is known as economy activity technique. ऐसी टेक्निक वो यूज करे कि जहां पे उसकी एनर्जी स्टोर्ड हो, जहां पे उसकी एनर्जी ज्यादा से ज्यादा वेस्ट ना हो, वैसी टेक्निक वो यूज करे. दैट इज इकोनॉमी टेक्निक्स एक्टिविटी टेक्निक्स. मींस अगर आप टीम गेम में हो, टीम गेम में क्या होता है, हर किसी के प्लेसेस होते हैं, उस प्लेस पे उसको परफॉर्म करना होता है. हर किसी का एक अपना जॉब होता है. ग्रुप ड्यूरिंग ग्रुप गेम्स एक टीम के अंदर उसका एक जॉब होता है कि कोई डिफेंड करेगा तो कोई अटैक करेगा, कोई मिड लाइन में डिफेंस करेगा. तो इस तरीके से उनके एक्टिविटीज, उनके जॉब्स डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं, इसलिए वो लॉन्ग टर्म तक परफॉर्म कर पाते हैं. तो उसमें टेक्निक्स होती है. इकोनॉमी एक्टिविटी टेक्निक्स मींस कि आपको एनर्जी सेव करनी है और लॉन्ग ड्यूरेशन तक काम करना है. तो उसके लिए आप जो भी टेक्निक यूज करते हो, दैट इज इकोनॉमी एक्टिविटी टेक्निक्स. सो इंड्योरेंस के लिए इकोनॉमी एक्टिविटी टेक्निक्स इज मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर द लॉन्ग डिस्टेंस रनर, फॉर द ग्रुप गेम प्लेयर्स जो ग्रुप में खेलते हैं, जैसे 60 मिनट 70 मिनट्स जो गेम में परफॉर्म करते हैं लॉन्ग टर्म के लिए. इंडिविजुअल गेम में भी ऐसा होता है कि लॉन्ग टर्म के लिए उनको परफॉर्म करना पड़ता है. तो उस समय के लिए उनमें एक्टिव इकोनॉमी एक्टिविटी टेक्निक्स होना बहुत जरूरी है कि वो अपनी एनर्जी को वेस्ट होने से बचाए, एनर्जी को लॉन्ग टर्म तक टिकाए रखे. Okay, so that is the economy activity techniques. The next one is muscles composition. So again here is the muscle composition. So muscle composition is compulsory for the strength, speed and endurance. Okay, so muscle composition एक कॉमन पॉइंट है, जहां हमने स्ट्रेंथ में देखा है, स्पीड में देखा है, देन अभी हम इंड्योरेंस में देख रहे हैं, दैट इज मसल कंपोजिशन. So it has already been discussed that two types of fiber are present in muscles, that is white means fast twitch fiber and red means slow twitch fiber. So the excess of red fibers in the muscle system ensure more endurance. तो हमने देखा है white मसल फाइबर्स जो है, वाइट ट्विच फास्ट ट्विच फाइबर्स, वो फास्ट ट्विच फाइबर्स होते हैं वाइट फाइबर्स, एंड वो शॉर्ट टर्म एक्टिविटी के लिए और स्पीड वाले एक्टिविटी के लिए यूज होते हैं. बट हमें लॉन्ग टर्म के लिए हमें एक्टिविटी करनी है, लॉन्ग टर्म के लिए हमें सपोर्ट चाहिए, तो वो रेड फाइबर्स के थ्रू मिलती है. वो स्लो ट्विच फाइबर्स है क्योंकि वो स्लो और लॉन्ग टर्म के लिए हमारा साथ दे सकते हैं. Okay, so this is a genetic factor which decides the endurance of the body. It is also genetic कि वो पहले से हमारे बॉडी में प्रेजेंट है. तो जहाँ पे जिसके बॉडी में ज्यादा रेड फाइबर्स है, वो लॉन्ग टर्म के लिए वो एक्टिविटीज को परफॉर्म कर सकता है, जहाँ पे रेड फाइबर्स का उसको सपोर्ट हो. देन व्हाइट फाइबर्स जेनेटिकली जिसमें ज्यादा, उसमें स्पीडी मूवमेंट्स ज्यादा होंगे. सो होप ऑल आर अंडरस्टैंड दिस. इट इज क्लियर.
It is clear for all muscle composition. Okay, this is the last type of factors which is determining the endurance, that is muscle composition. There we understand key two types of muscles fiber is there, which is fast, which is fast. White one is fast and red is slow twitch fiber. कि उनका क्या वर्क होता है, तो फास्ट ट्विच फाइबर जो है वो कम समय के लिए ज्यादा कॉन्ट्रैक्शन एक्सपेंशन की जरूरत होती है मूवमेंट्स में, उसमें हम फाइबर वाइट फाइबर को यूज करते हैं, और जहाँ पे लॉन्ग डिस्टेंस के लिए लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए हमें वर्क करना है वहाँ पे रेड फाइबर यूज करते हैं, तो दैट इज अवर मसल कंपोजिशन. तो ये टोटली डिपेंड ऑन जीन्स. ओके, सो ये जेनेटिकली डिपेंड होता है कि जेनेटिकली किसके अंदर ये फाइबर्स उनका जो स्ट्रक्चर है किस तरीके से हो. ओके, so hope all are understand this is the endurance. So in the next class we will see the physiological factors determine the flexibility. So now I want to ask you, anyone have a doubt? If no, type N. If yes, to type Y and saying B doubt. Okay. Okay, Sejal Vaidya, you have a doubt? तो थोड़ा सा हर्षित शर्मा को डाउट है. ओके, okay, so can I explain it with the PPT? Muscle composition or economy activity techniques or tolerance of lactic acid or aerobic capacity. Can I explain whole topic again? Okay, so in the next class, I will explain this topic again. Okay. Physiological factors determine the speed, endurance. Okay. तो मैं आपको नेक्स्ट क्लास में फिर से एक्सप्लेन करूंगी, सब लोगों ने एक बार पढ़ लेना है. ओके. Okay, so thank you so much all of you. Okay. Have a nice day.